my age, I'm not supposed to talk so much philosophical, but I live a philosophical life, and that's all what I've got to give you. I observed something around me. We humans are acing at being sympathetic. Did you observe that you enjoyed and you learned from people's sorrow and pain? सबने किसी के दुख तकलीफ और दर्द से सीख ली. But unfortunately, I don't have any sad story. The reason is वो एक सूर्य इतने तारों को उजाला देना वाला बनाता है. The sun gives the power to stars to shine brighter. And similarly, I have my family, my father being my son, who has given me so much of brightness that now I have the power to enlighten my surrounding and my environment. We have been habitual as humans to see the light in the darkness, but I have been taught to be the brightness and spread around the brightness. When I read the theme, Breaking the Archetype, and the first thing in my mind was, why to break the archetype? Let's make the archetype. Going out of the way, of course, but that's the new beginning. And we make a new archetype. Of course, for that, we need to change the path, but that doesn't mean breaking the principles of life. यहाँ पे बहुत लोगों ने बहुत सारी अच्छी बात और एक्चुअली लाइफ में सीखने वाली बात, याद करने वाली बात हमें बताई. इन सब चीज़ों में मैंने एक बहुत सुंदर चीज़ पाई. क्या आप ये सिंबल देख रहे हो? आई डोंट नो वेदर इट वॉज इंटेंशनल और इट हैपेंड, बट दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. एंड समय कभी उल्टा नहीं जाता, लेकिन समय सुधारा जा सकता है. सो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू ब्रेक द आर्किटाइप्स बाय मेकिंग न्यू वंस in following the path in the timeline. We cannot break and go back, but we can make new, and that is the meaning of breaking the archetype for me. Life lessons, इसीलिए इतने सारे बड़ी बड़ी बातें. I don't know whether you can connect to me or not, but we human beings, the reason we are here and not the animals, or maybe my foster animals are here, because we have 7 qualities amongst us. The values of life. 7 values of life. Can you count along with me, please? Can you count along with me? The first is happiness. We all know how to be happy. All the organisms around us know how to be happy. The second is peace. सबको चाहिए शांति. Third is purity. It's power. We all are powerful and we all love to show power. And with it comes the love, which we have in abundance. जानवर भी हमसे प्यार कर सकते हैं और हम एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं. I am sure that we love each other and family members. So again, let's go back to the count. Happiness, peace, power, purity, love, joyousness. Even animals do feel joyous. Even we feel joyous. And the last, which separates us as human beings from those creatures, is knowledge. Because those animals learn and live on experiences. किसी को देख के कुछ करके वो सीखते हैं, और हम इंसान वो ज्ञान से सीखते हैं. We learn from knowledge. So that makes us different. And that is the reason we need to imbibe these 7 qualities in our lives. We need to continue. When we talk about the times of pandemic, lockdown, जब ये दुनिया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होती है, when the problem is global, every one of us gets aware and the qualities within us starts being alive. It exists. We just need to nurture. कहीं ना कहीं अभी तक जितनी भी बातें हमने सुनी, वो आउटर वर्ल्ड, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, सुख सुविधाओं से थी. लेकिन हमने प्रेम की बात तो नहीं की, क्योंकि that archetype we are supposed to break, that it is not always success. It is the beauty lies in the failure as well. For me, success is not a word, not a definition. For me, being alive, being able to live a responsible life as a citizen on this planet,
Being a human being first before being called Bharg Setu Sharma. Being an animal activist first, then being called a student is what values my family has imbibed in within me. हम में से कितने लोग सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि आज मुझे खुद को खुश करने के लिए मेरे आसपास खुश रखना है. How many of you, please tell me, how many of you go to some picnic spots or some mountains, hilly regions for peace? कितने लोग ब्रेक लेने के लिए कहीं घूमने जाते हैं? We all know why. Because we are living in such a hectic schedule और हमने आसपास इतना स्ट्रेस पाया है. Little do we know that we are the stress. हम खुद वो स्ट्रेस एनवायरनमेंट बाकी लोगों के लिए क्रिएट कर रहे हैं which reflects action reaction. तो अगर imagine हम वो आर्किटाइप तोड़ते हैं, the environment, the surrounding around us, and we beautify it with our love, with compassion, pass on through your positivity, through your power, through your purity, all these 7 qualities which you have, give it to everyone. इतना ज़्यादा इन रिटर्न मिलेगा. इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हो या पता नहीं, पर रिटर्न ज़रूर आ रहा है. आई डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ अकाउंट्स, बट आई नो द लैंग्वेज ऑफ लव. जितना प्यार देते हैं उससे कहीं कहीं ज़्यादा प्यार मिलता है, और मुझे मिलता आया है. कहीं मैंने जानवरों को प्यार दिया, मुझे इंसानों ने प्यार किया. मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे रिटर्न कहाँ से मिला है, वो मैं कैलकुलेट भी नहीं कर सकती हूँ. We are always in the race of calculation. When I was in conversation with the convener, Mr. Ratan, there was one conversation कि lockdown के time, during the pandemic, during the tough times, how everyone amongst us started helping. हम में से कितने लोगों ने तो सेवा की, right? हम सब ने हमारी कैपेसिटी, हमारे पोटेंशियल में किया. जो लोग कर रहे थे उनको भी साथ दिया. और वो हुआ क्योंकि तब हम कोई रेस में नहीं थे. हमें सुबह उठ के किसी का एग्ज़ाम लेने नहीं जाना था, ना हमें कोई एग्ज़ाम देने जाना था. हमें अर्न नहीं करना था. हमें बता दिया था आप अर्न नहीं कर सकते हो. सारी मोह माया दुनिया की हमसे दूर हो चुकी थी, और सिर्फ एक चीज़ थी, वो थी एम्बिशन टू लीव एंड टू हेल्प पीपल लीव अराउंड अस. वो इतना समय हमें मिला कि हमने दुनिया की सारी चीज़ें छोड़ दी, एंड वी स्टार्टेड लुकिंग एट ईच अदर. We saw pain of each other. We saw love. हमने बहुत लोगों को encourage किया. हमने बहुत लोगों को प्यार दिया. और हम तकलीफ में थे, हमने हाथ बढ़ाया और सामने से 10 हाथ मदद के लिए आए. हमने ये देखा. This is the beauty of you people, me, sitting here. हमने हर चीज़ की वैल्यू की, हमारे डिग्री की वैल्यू की, हमारे नाम की, सरनेम की, रेस, कास्ट, रिलीजन, एवरीथिंग. लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि हमने हमारी ह्यूमैनिटी की वैल्यूज़ की वैल्यू करना छोड़ दिया था, और इस पैंडमिक ने हमें प्रेशर में लाकर वो बर्स्ट करवाया. सो प्लीज़ विद दिस आई रिक्वेस्ट दैट along with breaking the archetypes, maintain and make a new archetype. I believe that all of us with the race of life will be a good human being, because that is what makes us different and helps us blossom this world with love and prosperity. Thank you. Jai Hind.